तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो इसका लाइन बाय लाइन हम लोग रीडिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो फर्स्ट है 2.1 object around us. We have seen that our food and clothes have so much varieties in them, not just food clothes. There is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, a cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, color and uses. इंग्लिश में लाइन पढ़ी है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले था we have seen that our food and clothes have so much variety in them. तो जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो खाना और जो पहनते हैं क्लॉथ्स, उनमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। फिर हम लोग एक ही तरीके खाना खाते हैं या एक ही तरीके कपड़े पहनते हैं। नॉट जस्ट फूड और क्लोथ्स, ना ही भोजन और कपड़ों में। देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो कि हमारे चारों तरफ हैं, एवरीवेयर हैं, उनमें भी अलग अलग होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। वी सी अराउंड अस, हम लोग अपने तरफ देखते हैं। एक चेयर है, एक बैलगाड़ी है, जैसे कि ये बुलक कार्ट है, साइकिल है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है लेकिन अलग अलग। तो यही बताया जा रहा है ऑब्जेक्ट अराउंड अस में। कुकिंग यूटेंसिल हो गया, बुक्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, टॉयज हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, और भी मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है हमारे चारों तरफ। तो ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, color and uses. तो यही बता रहा है इस लाइन में। Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. इसको हम लोग कंचे बोलते हैं हिंदी में, glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could be also include like apple, orange and an earthen pitch. मतलब इसको earthen pitcher मतलब कि घड़ा जो होता है मिट्टी वाला, उसी को बोलते हैं earthen pitcher. तो अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें ऑब्जेक्ट को जो कि राउंड है शेप में, तो उनमें से हो सकता है कि वो एक रबर बॉल हो, फुटबॉल हो, और जो कंचे हैं वो नियरली राउंड ऑब्जेक्ट को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, अर्थन पिक्चर हो गया, मतलब घड़ा हो गया। ओके, तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो वो कौन कौन से होंगे? वो बकेट्स होंगे, लंच बॉक्सेस होंगे जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, टॉयज होंगे, वाटर कंटेनर्स होंगे, पाइप्स होंगे, एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक से बने इस ग्रुप में ऐड किए जा सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इन द above example, we have grouped the object on the basis of their shape or material they are made from. ये एक ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे बेसिस पे हम लोग इनको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में उनके शेप कैसा है, उनका मटेरियल कौन सा है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया कि कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा शेप, मतलब कैसा है शेप, इसका राउंड है या फिर कैसा है। तो बहुत सारे बेसिस होते हैं जिन पे एक ऑब्जेक्ट जो है
को हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। तो ये है ऑब्जेक्ट अराउंड अस में। और नेक्स्ट है ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। ये तो आपको पता है कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं एक या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल। ये ये सभी ये मटेरियल जो है इनमें से कोई सा भी मटेरियल हो सकता है जिससे कोई ऑब्जेक्ट बना हो। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप लोग और भी ज्यादा मटेरियल के एग्जाम्पल सोच सकते हैं? तो अगर आपको पता हो तो हमें भी जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। नाउ एक्टिविटी 1 से ही है चालू है हमारा। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस could get some everyday object from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside the school। यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने के लिए बोला है कि हमारे चारों तरफ जो हमारे पास है, या तो हमारे स्कूल में है या उसके बाहर कहीं क्लासरूम के बाहर में है, वहां से ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट। What will we have in our collection? क्या क्या हो सकता है हमारे कलेक्शन में? A chalk, a pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spokes of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom। हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट का भी लिस्ट बना सकते हैं जो कि हम लोग क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं मगर उन्हें लिख जरूर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बॉल हो गया, ट्री हो गया, डोर्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया। अब है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। इन सारे जो कलेक्शन हमने किया है ऑब्जेक्ट का, इन सभी में से हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे, छांट लेंगे जो कि वुड से या पेपर से बना हो। दिस मे हैव डिवाइड दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। ये तरीका है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को दो ग्रुप में बांट दिया। उनमें से one group has objects that are made from paper or wood, while the other group has objects that are not made of these materials। मतलब कि हम लोग ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग सीख रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले किया कि पेपर या वुड से बने हुए चीजों को हटा लिया, मटेरियल से एक तरीका हटा लिया और बाकी सबको एक साइड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट के दो ग्रुप बन गए, जैसे जो जिसमें एक में जो कि पेपर से बना है, पेपर से या वुड से, जो कि इस मटेरियल से नहीं बना है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ऐसे ही हम लोग उन चीजों को अलग कर सकते हैं जो कि खाना बनाने में उपयोगी होते हैं। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमैटिक। हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं कि लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 2.1। एक टेबल है यहाँ पे जो कि हम लोगों ने कलेक्ट किया है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। तो आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना है कि जो ऑब्जेक्ट है कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है। इट वुड बी फन टू मेक दिस। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में। लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज many objects as possible. It
may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the materials. तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको यहाँ पे लिस्ट टेबल बनाना है कि कौन सा मटेरियल का कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमारा एक्टिविटी 2 आता है, नंबर 2। तो टेबल 2.2 जो हम लोग अभी बना रहे हैं उसमें क्या होगा, एक लिस्ट सम कॉलम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। कुछ कॉमन मटेरियल्स हम लोग ऐड करेंगे कॉलम 1 में, जो कि यहाँ पे है कॉलम 1 आपका ये वाला पूरा सेक्शन कॉलम 1 में ऐड करेंगे। तो फिर कॉलम 1 में क्या, दैट आर known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list in column 2. तो जनरली हम सोचेंगे कि इस मटेरियल से हम लोग जो डेली यूज करते हैं वो कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि वुड के मटेरियल, कौन कौन से वुड के मटेरियल यूज कर हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे कि हमें याद है चेयर जो कि वुड का भी होता है, टेबल हो गया, बुलक कार्ट हो गया, हल हो गया, प्लग हो गया, और जो उनका व्हील होता है बुलक कार्ट का वो हो गया। पेपर का कौन कौन से मेटेरियल हम डेली यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल हो गया हमारा बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये भी हो सकते हैं पेपर के टॉयज में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग एरोप्लेन बना के यूज करते हैं पेपर का, हम लोगों ने तो किया होगा बहुत क्लास में। तो what do we find from these tables? First, we grouped object in many different ways. हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बहुत अलग अलग तरीके से ग्रुप किया। We then found that objects around us are made of different materials. ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ होते हैं अराउंड, तो वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। At times an object is made of a single material. एक ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगल मटेरियल से भी बना हो सकता है। An object could also made of many materials. एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे मटेरियल से मिलके भी बना हो सकता है। And then again one material could be used for making many different objects. ये भी हो सकता है कि एक ही मटेरियल अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। But decides which materials should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने में, तो क्या सोच के वही मटेरियल लेते हैं वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसको जानने के लिए हमको मटेरियल अलग अलग मटेरियल जो होंगी उनके बारे में और जानना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए tumbler is not made with a piece of cloth? इसे हम लोग ग्लास टम्बलर मतलब वही हुआ। कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। माइंड में रखने की टम्बलर क्या होता है कि जिसमें हम लोग जनरली पानी रखने का लिक्विड जो है रखने का हम लोग यूज करते हैं। देयरफॉर would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What do we need for a tumbler? Is glass, plastic, metal or other such materials that will hold water? तो हम लोग कपड़े से क्यों नहीं बना सकते ना, कि वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा।
तो इसके लिए हम लोग कौन टम्बलर बनाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया और अदर सच मटेरियल जो कि पानी को, वाटर को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट would not be wise to use paper like material for cooking vessels। पेपर लाइक मटेरियल हम लोग कुकिंग वेसल्स में, मतलब खाने में उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग on its properties and the purpose for which the object is to be used। So, what are all the properties of materials that would be important for their uses? तो इनके यूज में कौन कौन से प्रॉपर्टीज यूज मतलब कि जरूरी हैं वो हम लोग पढ़ेंगे क्या है। Some properties are discussed here। हम सब प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हो गया appearance। Materials usually look different from each other, like wood look very different from iron, iron appears different from copper or aluminum। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood। अपीयरेंस में हम लोग ये देखते हैं कि मटेरियल जो होता है यूजुअली लुक डिफरेंट, जैसे कि ईच अदर होता है अपीयरेंस में। जैसे हमें दिख कैसा रहा है, वुड एक लकड़ी जो है एक लोहे से अलग दिखेगा और एक लोहा कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखेगा, जबकि कुछ इनमें सिमिलरिटीज हो सकती हैं ऐसी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो कि वुड की तरह नहीं होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं एक्टिविटी नंबर अपना 3। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, chalk। Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into group। shiny material को आपको ग्रुप में लिख लेना इन मटेरियल में जो कि आपको दिखे। Now observe as the teacher cuts each materials into 2 pieces and look at the freshly cut surface। What do you notice? हम लोग फ्रेशली मटेरियल को हम अब कट करेंगे टीचर की हेल्प से और उसमें देखेंगे सरफेस में, फ्रेशली कट सरफेस में हम लोग क्या नोटिस करते हैं। Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials। तो अगर ऐसा कोई shiny material हमको काटने पे दिख रहा हो तो उसको भी shiny material वाले ग्रुप में इंक्लूड करना है आपको। Do you notice such a shine and luster is in the other material? Cut them anyway as you can। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of these with and without luster। लिस्ट बनाए आपको जिसमें हमारे क्लास में रिपीट करें, मटेरियल में देखें कि ऐसा ऐसा करें, कट करें, शाइनी होता है उसको अलग करें। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। luster मतलब चमक होता है। Materials that have such luster are usually metal। जो मेटल के पास इस तरीके की चमक होती है घसने पे, काटने पे या हमें ऐसे ही शाइन दिखाई दे, वो जनरली जो है वो मेटल्स होती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड गोल्ड आर द एग्जांपल ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर शाइन। सम जो मेटल्स जो है अपना शाइन चमक जो खो देते हैं एंड appear dull बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर।
and moisture on them. मॉइस्चर और एयर के कारण जो प्रेजेंट होती है वो अपना लश्चर जो खोल देते हैं. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metals rods to see if they have luster. अभी हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में. तो हार्डनेस जो कि एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का ना. तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. टेक ए मेटल की and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of a stone, a nail, candle, chalk, and other materials or objects. You can easily scratch some materials, while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft metal, while some other materials which are different to compress, difficult to compress, are called hard. जो कि different, for example, cotton or sponge is soft while iron is hard. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. You think of other properties that describes the appearance of a material? Soluble or insoluble. अभी एक्टिविटी नंबर 4 आता है. Collect sample of some solid substances such as sugar, salt, chalk, powder and sand and sawdust. तो ये सब चीज आपको कलेक्ट करनी है. तो जो कि एक्टिविटी नंबर 4 में टेक 5 glass or beakers, fill each one of them about 2/3 with water. 2/3 जो है वाटर से भर दें. Add a small amount of a sugar to the first glass. कुछ पहले ग्लास में हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ हम लोग शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं. Salt to the second. Similarly, add small amount of the other substances into the other glasses. Stir the contents of each of them with spoon. मतलब कि उनको जो भी लोगों ने दिया, शुगर मिलाया, चीनी मिलाया या फिर नमक मिलाया, उनको हम लोग चम्मच से घोल ले. Wait for a few minutes. Observe what happened to the substance added to water. Note you observe as shown. जैसे दिखा रहा है क्या हुआ, वैसे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे. You notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not appear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. समझ में आया कि जो कि बहुत सारे लंबे समय तक हम लोग इसको घोलते भी रहे तो वो मिलते नहीं है. तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग insoluble in water कहते हैं. Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquid also dissolve in water?
क्या लिक्विड वाटर में डिजोल्व होते हैं। चलिए चलिए आगे। तो आता है मैं एक्टिविटी नंबर 5। कलेक्ट स्मॉल ऑफ vinegar, lemon juice, mustard oil, and coconut oil, kerosene oil, or any other liquid. Take a glass tumbler, fill it up to the half with water, add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mix with water. Repeat the same with other liquids. ऐसा आपको हर एक लिक्विड के साथ करना है. As many different liquids are available to you, write your observation. तो हम लोग और ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, इसको लिखेंगे विनीगर, जो कि पानी में वेल मिक्सड हो जाएगा. ये हम लोग खुद से करेंगे. We notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and from a separate layer when kept aside for some time. तो अलग लेयर ही बना लेते हैं अपना. कुछ लिक्विड मिल जाते हैं वाटर में. तो ऐसा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. तो ऐसा आपको करना है, देखना है कि क्या होता है. Some glasses are soluble in water whereas other are not. ग्लासेस बोल रहा हूं मैं, गैसेस. सम गैसेस, सॉरी गैसेस. Water usually has small quantities of some glasses dissolved in it. For example, oxygen gas dissolves in water is very important for the survival of animal and plants that lives in water. ये तो आपको पता ही होगा. अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर में. वाइल डूइंग एक्टिविटी नंबर 4, जो कि हम लोग एक्टिविटी नंबर 4 की जो वाटर लिया था उसमें लिक्विड मिलाए थे और उसका हम लोग चार्ट बनाए थे. यू माइट हैव नोटिस दैट द insoluble solids separate out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity number 5. So some of these materials that do not mix with water floats to the water surface. Other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that floats in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond, few hide behind a glass window, few drops of honey that you let fall in a glass of water. What happened all of these? Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that floats and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or shrink in other liquid like oil? Now हमारा आता है transparency. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide. So what you not seen by others? Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not. As your friends can see those throughout that and spot you. Spot you. Can you see through all the materials? ऐसा क्या हम सही मटेरियल के देख सकते हैं सब कुछ? Those substance or materials through which things can be seen are called transparent. हम लोग आर पार देख सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं.
जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. Okay, shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatable in transparent container of a glass or plastic, so that buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials to which you are not able to see. These materials are called opaque materials. जैसे कि हम लोग किसी मेटल चार पार देख सकते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिससे हम लोग आर मेटल ऐसे भी होते हैं जिससे हम लोग आर पर नहीं दे सकते हैं तो उनको ऑप्टिक मटेरियल बोलते हैं. यू cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, carton, and a metal container. तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं wood, cardboard, and materials are example of objective material. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion, either objective or transparent? हम नंबर 6 पढ़ेंगे. Take a sheet of paper and look through it forward towards light bulb. Take a note view of your observation. Now put 2 3 drops of some oil and spread it on a sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been separated. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly, known as translucent. So remember the oily patch on the paper which we tested from food items for presence of fat. जो हम लोग इसे कतरा पढ़ा था, that was translucent too. Can you think of some more examples of translucent material? We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. तो हम लोग इन मेटल को ग्रुप कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque में. पहली suggests covering the glass of torch with your palm or at the dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. See what we want to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. We learned that material different in their appearance and may they mix in water or other liquid. They may float, sink in water, or may be transparent, opaque, translucent. Material can be grouped on the basis of similarities or differences in their property. Why do we need to group materials? In everyday life, we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one container corner of the shop, and soap
at the other, while grains and pulses are stored at some other places. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है, मतलब कि हमारा रीडिंग एंड होता है इस चैप्टर का। तो हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आपको इसकी समरी पढ़ लेनी है और फिर से आपको एक बार रीडिंग करनी है और एक्सरसाइज करने का ट्राई करना है आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप लोग जो काम तो आपको दिया गया है वो पूरा करें। तो बाय।